बातें जैसे भाई नमस्कार, सबने राम राम और सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। यस और आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम तीनों दिल्ली थिएटर पे एक साथ थे। ऑफकोर्स दे आर माय सीनियर्स, पर हम थिएटर एक साथ करते रहे। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ एक इंसान जो थिएटर करता था, बेसिकली इज एन इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी, one of the best engineers, very brilliant student from there. I know it because हम फिल्म फेस्टिवल्स के लिए कई बार वहाँ जाते थे, तो हमने सुना देखा, and he was one of the toppers there. और थिएटर में के शौकीन थे। फिर उसके बाद अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए, हम लोग सब मुंबई आ गए। और बहुत साल पहले योगेश जी से मैं मिला, जब बॉम्बे आए हैं तो सबको मिले, मुझे भी मिले। और उसके बाद फिर हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, मिले नहीं। और बहुत अरसे के बाद जब फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और डायरेक्ट करने जा रहे हैं, और एक छोटे रोल की ऑफर भी की थी, तो मैंने बोला कि ऐसा रोल नहीं करता हूँ। पर आज बड़ी खुशी है कि ये जो फिल्म है और विंटर टेल एट शिमला, एट शिमला और योगेश वर्मा फिल्म। सो ये जब हम पोस्टर देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और योगेश को तो बहुत बहुत बधाई और इनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं कि ये फिल्म अच्छे से रिलीज हो, लोग देखें, लोग पसंद करें। जो सब्जेक्ट इन्होंने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आपको सच बताऊं तो इन्होंने जो वन लाइन बताया, मैं कुछ राइटर्स जब मुझे बोलते थे कोई आइडिया है आपके दिमाग में, तो मैं बोलता था इस तरह का कुछ लिखो। तो अभी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हरी इच्छा ये फिल्म चले और बहुत सारे लोग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। I think it's fabulous, you know. I think everybody should learn from this on a daily basis, you know. We are like, let's do something. But I think it's fab, you know, that somebody's debuting, you know, it's Yogesh, 65. I think it's bravo and kudos. I can't hear you, sir. Well, I'm looking forward to watch Winter Tale. So yeah, that's something I'm looking forward to. Huh? बड़ी लंबी कहानी नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी है। मतलब 200 साल चली जाएगी यहाँ पे, खड़ी रहो तो बोल। हाँ, हम सब बुढ़े हो जाएंगे यहाँ पे। नहीं, मुझे बोलना नहीं है, सिंपल मैं अवॉइड कर रही थी, समझो ना दिमाग वालों। The film? Okay. So, the Winter Tale at Shimla. So, I saw the theatrical trailer and the songs. They are really amazing. And of course, being from a non-filmy background and being an actor and singer, I love when people are promoted, you know, like new people. And it's a movie where there are not very big names, but people from television and all over newcomers. And I really like the trailer because it catches a bit, you know, the classic love stories of we used to see in 90s and in 2000, all these eras. So now it's all different, as you know, the movies which are coming. So it goes back there, even the songs sung by Udit Narayan sir and Ritu Pathak, of course, I've worked with her. And the song was amazing, Chaliya. I really love the song. And yeah, so a Winter Tale at Shimla, it gives me a Shimla feeling, winter feeling in Mumbai. So that's why I'm all dressed up like this. And I wish all the best to the team and Mr. Yogesh Verma, who has, as I heard that he has given so much effort and love and passion into this movie. I wish the whole team all the best. I'm looking forward to watch it and I'm sure it's gonna rock. Thank you. के बारे में बोलने से पहले तो मैं I would like to talk about Yogesh ji. I've met him for the first time today
met Yogesh ji for the first time today. You know, I have grown up with a saying in English, which goes by something like this: that if you chase your passion and not your pension, it'll never be too late to become, what you could have had been, or what you might have been. What Yogesh ji has done is extremely courageous. I am a risk taker personally, but believe you me, I would have never done, or I would have never managed to gather, courage to create something like this. He's put in his own funds. He's had a fantastic corporate journey. I've had a fairly, exciting corporate journey, and then I turned entrepreneur. But believe you me, what he's done is exemplary. Now, talking about winter tales in Shimla, looks like a very शिमला मूवी जो है इट्स लाइक अ वेरी एंथ्रॉलिंग एक्सपीरियंस. जो योगेश वर्मा हमारे डायरेक्टर है, आई मीन वो इतनी एनर्जी के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. थैंक यू. किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था, इसलिए मैं हमारे योगेश जी डायरेक्टर साहब हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारी इस फिल्म का, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी ये मूवी जो है दर्शक पसंद करें, उनको पसंद आए, वो देखें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आई थिंक एक स्टेज पर आती तो खाता नहीं है, एक अच्छी सी एक भीनी भीनी याद रहती है, और एक बड़ी प्लेजेंट फीलिंग है. आई डोंट थिंक इट इज कोरोसिव. दिस लव इज नॉट कोरोसिव. दिस लव इज सस्टेनेबल. ये तो आपकी एक जिंदगी की बहुत ही अच्छी अनुभूति थी. वो पल याद रहते हैं, वो आदमी उसको उस याद में गुमसुम रहता है अकेलेपन में अपने. बट उसको ये सोचना कि वो उसकी वजह से जैसे देवदास बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता. आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल who are sensible. There are all types of people in the world, but most of the people who are sensible, who have done well in life, who have their own dignity, who have a place in society, will carry that feeling till the last day, but not even express it, because they know expressing it would be. For instance, I have a friend who's a Supreme Court judge. We walk with him in the mornings. तो जब उसने मेरी कहानी सुनी कि वर्मा जी क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया, कहना यार ये तो बिल्कुल सही है, ये तो मेरे भी दिल में है, एक मेरे भी दिल में. किसी से कह नहीं सकता, मैं आपको भी बता नहीं सकता, लेकिन है, ये बात सच्ची है कि हर पल उसकी इंतजार रहती है. 40-50 सालों से उसकी वेट कर रहा हूँ. जहाँ जाता हूँ तो नजरे में ये ऐसे मन में कहीं से बैक ऑफ द माइंड में आता है कि वो मिलेगी. आज मिली नहीं अभी तक. तो जब मिले, मैंने कहा अगर मिलेगी तो क्या करोगे? जाकर उसका हाथ पकड़ लोगे, उसको बोलोगे कि हम लोग इतने करीब थे, हम लोगों ने वी स्पेंड गुड टाइम टुगेदर? नो, शी इज इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, यू आर इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. लाइफ हैज टेकन यू फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड अलाउड डिग्निटी टू ईच अदर. नाउ एक दूसरे के प्रति एक जिसे कहते हैं कि आई विश यू वेल, तो मेरी नहीं हो फिर भी बस आई एम फॉर यू फॉर एवर, काउंट ऑन मी. सो दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव ट्राइड टू शो हियर. वेरी मैच्योर एंड so we have a star here in the Nildi. Ab aaye. Come here. So in this film, the protagonist, he is he's propagating the concept of Vedic management. What is Vedic management? You all know, is a different way of life and different way of managing large corporations or society or a nation or a country or a community. जो 5-7 प्रिंसिपल हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह फिल्म में बखान किया है, जिसे कहें शुभ लाभ. बिजनेस का मतलब होता है शुभ लाभ, प्रॉफिट्स विद गुड मीन्स, हमें एथिकल प्रॉफिट्स, और ऐसे ही कैन गिव बेटर टॉक अबाउट इट. तो ये उस तरह के स्कॉलर हैं, और इनकी लाइफ में अचानक एक दिन वो इनकी पुरानी जो जिनके साथ इनका संबंध था वो अचानक वापस आ जाती है. आई थिंक आई लीव द स्टेज फॉर हिम, एंड ही लुक्स यंग
but he's performed brilliantly on the role. I am not young though. I look young. Yeah. Yeah. अच्छा रहा experience. First of all, we had a very good team to work with. Yogesh ji is the one who has thought of the story, has written the story, has directed it, and he has also produced it. So I think he believed in the subject completely, and it's always good to work with someone who believes in their product. So that conviction when it comes onto the actors, it really works in a film. So वो अच्छा लगा. प्लस हमारी टीम अच्छी थी, एक्टर्स बहुत अच्छे थे. गौरी के साथ बहुत सालों से मैं जानता हूँ गौरी को, बट वी हैव नेवर वर्क टुगेदर. एक्चुअली जानता हूँ मतलब आई न्यू ऑफ गौरी, आई नेवर इंटरेक्टेड विद हर. सो इस फिल्म के दौरान गौरी के साथ इंटरेक्ट किया. बाकी जो भी ऋतुराज जी हैं, जितने भी सारे एक्टर्स हैं, दे आर ऑल गुड एंड इट्स शॉट इन अ ब्यूटीफुल प्लेस, शिमला. So we had a great time and it's great experience, and it's a nice mature love story as we are claiming it, because of the people who are mature in age as such, and also in terms of the depth of the story is also mature. So it's nice. I like it. It's a nice, simply told, beautiful love story. देखिए ये जो है कि नहीं बयान नहीं कर पाया था, ऐसा तो कुछ नहीं था. इसमें ऐसा है कि अनरिक्विटेड लव है, ठीक है. सो ऐसा तो मुझे लगता है हम सबकी ज़िंदगी में हो चुका है. तो दैट्स नॉट एन एक्सपीरियंस दैट actually we have not gone through. Almost everyone, probably it's very rare that the person you love with the first love you end up with that person. It's very rare. So everyone has that feeling. बहुत rarely ये होता है कि वो इंसान आपको फिर से एक बार कहीं मिल जाता है और फिर वो you feel the pangs, but still you are at a situation in your life where you do not pursue that relationship or might want to, but it doesn't go ahead. तो वो था. So I think everyone has that feeling inside them. So it was not so difficult to bring out that feeling. So I really don't think it's a very rare happening. That's what it's very relatable. I feel anyone from of a certain age might be able to relate to that thing. I mean, they might not have gone exactly through the same thing, but it's relatable. Love in the Time of College. Right. It's based on Gabriel Marquez's book. Yeah. No. First of all, though, I as an actor, I never like drawing parallels to anything. I don't like referencing work, because even if some story or some character or some role is similar to something that has been done in the past, I don't like referencing that, because I feel that I do not want to be influenced by something that has been done before, knowingly or unknowingly, consciously or subconsciously. So even if I do a remake of a film also, I will not watch the original film. That's my approach to work. I believe this character would be living a life of solitude, mostly for someone who's not living a happily married life, continuing for eternity. इस किरदार में बदलने के लिए आपको मतलब थोड़ा नहीं, सॉलिट्यूड नहीं करना पड़ता. ये मुझे लगता है कि ये सब चोचलें हैं जो एक्टर्स लोग यूज़ करते हैं टू ग्लोरीफाई देयर प्रोफेशन. दैट मैं सॉलिटरी कैरेक्टर प्ले करूँगा तो मुझे 3 महीने अकेले रहना पड़ेगा किसी फार्म हाउस में जाके. ऐसा कुछ नहीं है. तो फिर एक्टिंग कर लो ना. एक्टिंग ही करना है. एक्टिंग करना है ना. व्हाट इज एक्टिंग? एक्टिंग इज कन्विंसिंग प्रिटेंस. दैट्स इज एक्टिंग, राइट? अगर आपको किसी का रेप करना है तो आपको तो रेप नहीं करने की ज़रूरत है ना. यू टू प्रिटेंड दैट यू आर अ रेपिस्ट, राइट? सो दैट वे सॉलिटरी रोल है, तो इसके लिए अकेले रहना पड़ेगा, उस मानसिक जगह पे जाना पड़ेगा. तो आई फील it doesn't work for me like that. I think it's a glorifying thing that actors say because it sounds superb. It sounds, oh my God, he did that. But it is not required. It's not required at all. Thank you. Okay,
so like you said, it's about my life when I was young and then the current life. So very natural, yeah, very normal. What anybody who's at this stage of life with a husband and a grown-up, maybe a teenager daughter, all settled but still not at peace, not very happy in the marriage. But still settled in the sense that she knows that she has to do this for her daughter and be in the marriage and trying to keep herself happy. So, but when this man comes back into her life after so many years, then obviously everything changes. But at the same time, she knows where to draw the line and not to cross that line. And they're more like friends, even then. Obviously, the husband takes it in the other way. And then what all she goes through after that, because of that confusion, and how she comes out of it, the story is all about that. Yeah, you can say that, because I've come back after a long break, though I've done shows, but I've never done a film before. So this is my first film. Yeah, and I think when Yogesh ji for the first time made me hear the story, I just, without even, I don't think I took much time to say yes to it. Yes. I'm sure most actors who do television, especially employment, earning your bread and butter. A lot of them have celluloid dreams. Of course. It's always been very difficult for outsiders to get a break inside the film industry. उस दौरान obviously, लेकिन आपको लगता था कि जब success शुरू हुई कि शायद फिल्म मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली? So I always had film offers, always, all my life, but I never took them up because I was very content. I'm not a over ambitious person, so I was always very content and happy with what I was doing. So I never took them up. But now I think at this stage of my life, I can explore more options. And when something like this comes your way, it's really difficult to say no. No, it's not. It's fun. It's a lot of fun. Challenges in this sense, not when you start working. There are hardly any challenges. It's so much fun. You come back, you're doing the film for the first time, and then you're coming back after so many years. But when you have a family, home, children, your other jobs, profession, you leave all that and disconnect yourself and then come and stay somewhere else. This is the first time I've left my kids for so long. 3 weeks we were in Shimla. We had a great time, but that's the only challenge. Apart from that, it was all fine. Yogesh ji was great. We were all like one family, so we had a great time. नहीं होती है, कोई किसी दिशा में निकल गया। हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि हम सब लोगों के बीच में एक ही बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था जिसका कि नाम था योगेश वर्मा, जिसको हम यू योग्य करके बुलाते थे, और इतना हार्ड वर्किंग आदमी था, काम भी करके आता था और फिर सारा थिएटर का भी काम करता था, और हर वक्त ऑल द टाइम ही वॉज देयर। और इतने भद्र नहीं थे ये इतने कि आज लग रहे हैं, इतने सब आदमी लग रहे हैं। हाय मनीषा, मैंने मनीषा के साथ एक फिल्म की है, इसलिए मैं ये मेरे मित्र हैं, हैदराबाद से अभी आए हैं। तो हम तो सिर्फ नहीं जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया होगा वो बहुत अच्छा बनाया होगा, क्योंकि ये बहुत मेहनती आदमी है, ट्रस्ट है, हाई ट्रस्ट है। अपने जितनी खुशी दोस्तों के साथ आती है ना, जैसे अब बीरू, पवन और भी हमारे बहुत प्रिय मित्र थे, वो तो गुजर गए। विनोद दुआ, मैं उनके बारे में ज़रूर याद करूंगा आज, क्योंकि मेरा बहुत अजीज मित्र था, हम सबका बहुत अजीज मित्र था। सुधीर मिश्रा जी आज नहीं आ पाए। सुधीर मिश्रा भी बहुत अच्छे, हम पांचों लोग, हम एक ग्रुप था। सुधीर मिश्रा तो आज आ नहीं पाए, लेकिन विनोद जी की पिछले साल कोविड में बड़ी ट्रेजेडी हो गई, वो चले गए। आपने सुना होगा नाम, बहुत बड़े जो 60 के ऊपर हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, प्लीज़, आपने पैसे बहुत कमाए होंगे, आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में रहे होंगे, CEO रहे होंगे, बिजनेस हेड रहे होंगे, लेकिन 60 साल के बाद आप करेंगे क्या ज़िंदगी में? जो पैसे कमाए हैं उसको आपको लोगों तक पहुंचाना, अपने एक मैसेज देना है। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फिल्मों के माध्यम से ही कह सकते हैं, और फिल्म नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं। इसलिए वर्मा जी को बधाई हो, और मैं उन तमाम लोगों से चाहूँगा कि जो लोग भी
फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं और फिल्मों में काम करना चाहते हैं, यही मौका है इंडस्ट्री के लिए कि आप लोग आएँ, मोस्ट वेलकम, और अच्छी फिल्में बनाएं और हमारी पूरी जनता को अच्छा एंटरटेनमेंट दें। थैंक यू। So the thing is that, always people say that behind every successful man there is a woman. So that woman is her and I have come to support her. इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, वो मेरे पीछे वही हैं, लेकिन I have come to support her and I wish the team and everyone all the very best for this music launch and for the movie. So yes, listen to the song and enjoy it and let everybody know that you liked it, so that they will be inspired and they would want to keep on doing something like this, So जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कैसे होगा, पता चलेगा उन्हें भी कि क्या किया, अच्छा लगा, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं. So thank you so much and all the best to everyone. Thank you. This is a realization of a dream. As a young person, I always wanted to be in the industry, but didn't get the fortunate circumstances. For 40 years, I was in the corporate world, and at 60, I chose to retire and do what my mind or my passion drove me to do. So I do think that there may not be another person who would have made a debut in the industry at this age. So at 65, I'm proud that I've been able to do it, and much credit to the team of people who I could gather, and we worked very hard. The film is with excellent production values. It's a beautiful story on classic love, the kind of love that you don't see these days. Classic love is different from the ordinary love where there is yearning, there is separation, like the Shiri Farhad, Romeo and Juliet. Classic love का मतलब ये नहीं है कि you will definitely become a couple. There is definitely yearning and separation. And you don't make claims at each other. सबसे बड़ी बात ये है. So this film is about young people, and as they grow up, they couldn't be together, but when they meet again in life, at that time, both of them are in their own set of circumstances socially. One is an eminent professor, a globally recognized scholar, and the other one is the wife of a DIG, much like caged in a social setup. तो वो लड़की जो पहले बहुत चुलबुली थी, she had a great lust for life, has now become a housewife, and this man is an eminent professor. When they meet again, there are sparks, but this woman is having a family, a home, an identity which she does not want to disturb. And how the man lets her be, there are no claims because they had an intimate love, they had strong bonds. और मेरा भी ये 65 साल की उम्र में मेरा एक ये मेन पॉइंट ये था लाइफ में कि जब आप 40-45 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखते हो तो the physical intimacy and all the emotional drama that happened between you gets withered away. It is the spiritual connection that you remember, that you carry in your life. वो एक के साथ ही होता है और वो जरूरी नहीं है आपकी पत्नी हो या आपकी प्रेमिका, कोई भी हो सकता है. So that is the kind of lifelong feeling that you carry in your mind. और interestingly, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, very senior people in society, I can't name them of course, they said yes there was one. आती उसकी याद आती है. जब हम किसी मॉल में घुसते तो लगता है कि वो शायद मिल जाएगी, बस में बैठते तो शायद साथ वाली सीट पे बैठी होगी, कहीं भी जाते हो तो उसकी आस दिल में रहती है, शायद सारी जिंदगी मिलती भी नहीं है. और वो जब अगर मिल जाए किसी को, तो जब मिल जाए तो आप फिर उसको जाकर उस पर हक नहीं जमा सकते कि तू मेरी थी. From a distance only you can respect her. There is a great amount of dignity that happens. आप एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन एक दूसरे पर हक नहीं जमा सकते अब. तो उस तरह की जो सबलाइम इमोशंस हैं, ये फिल्म कुछ इस तरह से बनी हुई है. सर ये कोई रियल लाइफ से प्रेरणा ली है? हाँ, नहीं ये मेरी लाइफ नहीं है certainly, बट हाँ ये कुछ लाइफ के कुछ कैरेक्टर्स, कुछ एपिसोड्स, कुछ कहानियाँ जो जिंदगी में देखी सुनी थी उनको पिरोया गया है. एक और क्योंकि कहानी को जब प्रेजेंट करना है तो स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड हैव अ गुड नरेशन, तो बहुत से ऐसे सामान जुटाया है कहानी को
ब्यूटीफुल बनाने के लिए. अदरवाइज इसका सेंट्रल पॉइंट यही है कि दैट ओनली वन थिंग रिमेन्स इन लाइफ, और हर एक की होती है, हर एक का होता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को बता भी सके कि ये ऐसे मेरे दिल में किसी के बारे में तस्वीर छुपा के रखी है, और अगर वो अगर लाइफ में मिल जाए तो क्या जाके उसका हाथ पकड़ लोगे क्या? सो दैट इज़ द एसेंस ऑफ द फिल्म. और दूसरी बात ये है कि इस फिल्म के अंदर ये इंट्रीग है, क्योंकि प्लॉट होना चाहिए, तो प्लॉट ये है कि ये जो है, शी इज़ द वाइफ ऑफ द DIG, एंड द DIG बड़ा फेरोशियस है, उसका बड़ी रेपुटेशन है, इज नोन एज द एनकाउंटर स्पेशलिस्ट. ही इज अ मैन हु इज अ लॉ इन हिमसेल्फ. इस बंदे को पसंद नहीं है तो उसको उसी टाइम ठीक कर दो, कोर्ट वोट में जाने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं 2 मारो और ठीक कर दो. तो व्हेन द DIG कम्स टू सी दैट द वाइफ शेयर्स अ माइंड स्पेस और लुक्स अप टू or remembers that man, he is very upset. So what happens between them? So this is also a love triangle in a way, that way. गौरी प्रधान का कमबैक. हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौरी प्रधान जी बहुत सालों बाद, आई थिंक 12-15 ईयर्स के बाद एक्टिंग कर रही हैं. और मेरे को किसी ने अभी पूछा कि आपने स्टार कास्ट ये वो सब हुआ, सब लोग पूछते. मैंने कहा मैं आप इस फिल्म को देखने के बाद बताना कि क्या इस रोल को गौरी के अलावा कोई और कर सकता था. शी इज सच अ ब्यूटीफुल एलिगेंट लेडी एंड अ गुड एक्ट्रेस, एंड एट दिस एज, बिकॉज माई हीरोइन इज 46 year old and she does a beautiful performance. So I'm convinced that she was the best choice, and she too is very happy in having performed and come back to the industry in a very meaningful role and in a brilliant performance. काफी सालों से जैसे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, तो वो इज द मेकिंग ए मूवी वाज देयर इन योर बकेट लिस्ट, लाइक फ्रॉम हाउ लॉन्ग? मैं actually making the movie would have been very ambitious, and it was irrelevant because I was in a business head role, like I was managing director of DLF, many companies like Wellspun. मैं कई जगह रहा, तो उस वक्त ये नहीं था कि फिल्म बनाऊंगा. तो जब मैंने 60 साल में, स्टोरी राइटिंग वॉज माई पैशन, तो मैंने कहानी लिखनी शुरू करी. मैं कहानी लेकर मुंबई में आया, 2-3 लोगों से मिला, तो कुछ ज़्यादा मुझे कहानी सबको अच्छी लगी, लेकिन मुझे कुछ जरिया नहीं मिला आगे बढ़ने का. तो फिर मैंने सोचा कि यार ये अगर कहानी को प्रकट करना है, लेके जाना आगे, तो आई विल हैव टू डू इट माई सेल्फ. सो आई हैव मेड दिस फिल्म एंटायरली फ्रॉम माई रिटायरमेंट फंड्स. So it's I have no financing, nothing. ये मेरे अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और जो पेंशन सुपरएनुएशन वो सब डाल के मैंने ये फिल्म बनाई है. Such a warm person, and the film that he made is also like about women and women empowerment, and also you'll see when it comes out more. Really heartwarming to like work in it. It was really good. Also working with Agastya Productions, how was the experience of that? Everybody, from the day I landed till the end day and even today, everybody is so warm and so welcoming. So loved the experience of working with everybody in the team. Along with that, Gauri Pradhan, she has come back after 15 years. Yes. I'm so excited for her comeback, and I'm playing the younger version of her in the film, so I'm really excited. And apparently we also look a little bit alike, so that's great. Works for the film, I guess. Yeah. Lastly, what do you want to say about your fans? Just basically I want to say कि ये बहुत ही प्यारी पिक्चर है. जब भी रिलीज होगी प्लीज़ आप देखिए, and you'll really love it. It's a family film. Everybody's going to like it. Everybody's going to understand what's happening. So I'm so excited for it to come and for all of you to watch it. Thank you so much.